Assalamu alaikum, this is me Zebunissa. Bismillahirrahmanirrahim, and today's video is about kids vocabulary. So this is more for kids than youngs and elders. So the first one word is turn on. Turn on mean light on करना यानी कि रोशन करना. Turn on the light, लाइट रोशन कर दो. टर्न ऑन द बल्ब, बल्ब रोशन कर दो. सो ये यू कैन सी के छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं वो बोले जाते हैं. सो इसका अपोजिट है टर्न ऑफ. टर्न ऑन रोशन करना, टर्न ऑफ बुझा देना, लाइट बुझा देना. टर्न ऑन द बल्ब, टर्न ऑफ द बल्ब. सो दीज आर antonyms to each other. The next one is pick up. Pick up mean to collect something from the earth, or to gather something like pick up. So pick up mean इकट्ठे करना, उठाना, इकट्ठा करना. Pick up. Pick up these pieces. Next is put on. Put on. Put on the shirt. Put on mean पहनना. Put on the clothes. Put on your coat because it is cold outside. यानी कि अपना कोट पहन लो, बाहर सर्दी लग रही है. So put on means पहनना. And on the other hand, put off mean उतारना. Put on, put off, these are antonyms. So actually these are फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स में एंड वर्ब्स में डिफरेंस ये होता है कि फ्रेजल वर्ब्स के साथ जो है वो प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं, लेकिन प्रेपोजिशंस एज एडवर्ब यूज़ होती हैं, प्रेपोजिशंस के तौर पर नहीं यूज़ होती. ये जो यहाँ पे ऑन है, ऑफ है, अप है, ऑन है, ये एज एडवर्ब्स यूज़ हुई हैं. लाइक टर्न ऑन जो है, ऑन जो है ये टर्न को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है. ऑफ जो है टर्न को डिस्क्राइब कर रहा है. अप जो है ये भी टर्न को पिक को डिस्क्राइब कर रहा है. ऑन जो है ये पुट को डिस्क्राइब कर रहा है. तो जो एडवर्ब्स होती हैं वो वर्ब को डिस्क्राइब करती हैं, जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करती हैं. द नेक्स्ट word is vocabulary is get in. Get in mean किसी get in the car, get in the bus like this, यानी कि सवार होना. And get out mean उतरना. So these are opposites. Get in सवार होना, get out उतरना. And get off mean दफ़ा होना. Take out यानी कि निकालना. Take out निकालना. Take out something. Take out like when the teacher says take out your notebook, take out your pen, take out something like this. Grow up यानी कि परवरिश पाना. You can see here first one, this is a baby, then you can say something elder, and then here is a young girl. So grow up mean परवान चलना, परवरिश पाना. Go out बाहर जाना, and come in अंदर आना. These are also opposites. Look for mean तलाश करना, and look after mean ख्याल रखना किसी का. Throw away mean फेंकना. Throw away फेंकना. So these are phrasal verbs, and these are especially for kids, or you can say earlier children, school going children. So keep connected with us for the further videos, and we are also arranging a session for the youngs as well as for the professionals like academic English and spoken English. You can contact on my number out 331. Let me write here. out 331 844 out 522, and name is Sebunisa. Okay, see you. Allah Hafiz. See you in next video.